माननीय एमसी के स्पीकर्स, सम्मानीय अतिथिगण और मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को हमारे आज के आईपी इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम, जिसे हम हिंदी में निवेशक जागरूकता कार्यक्रम कहते हैं, मैं ऋषभ शाह पिफा की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का यह विशेष अवसर हमें ज्ञान, विचारों और अनुभवों का आदान प्रदान करने का अद्वितीय मंच प्रदान करता है। सबसे पहले मैं हमारे माननीय एमसी के स्पीकर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं, जिन्होंने हमारे इस सेमिनार में अपनी उपस्थिति देकर इसे और भी विशेष बना दिया है। इसके साथ ही मैं आईपी को सुनने आए सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सभी का यहाँ होना हमारे लिए एक अत्यंत गर्व की बात है। आईपी का आयोजन हमारे लिए एक महत्वपूर्ण अवसर है, क्योंकि यह हमें विभिन्न विषयों पर गहन ज्ञान और समझ प्राप्त करने का मौका देता है। आज के इस आईपी का मुख्य उद्देश्य हमारे ज्ञान को व्यापक बनाना और हमें नई नई जानकारियों से अवगत कराना है। हमारे वक्ता अपने अपने क्षेत्र में विशेषज्ञ है और उनके अनुभव और ज्ञान से हम बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। उनकी प्रेरणादायक बातें और मूल्यवान सुझाव हमारे भविष्य के लिए मार्गदर्शक सिद्ध होंगे। आज इस आईपी के माध्यम से हम नए विचारों को समझने और अपने दृष्टिकोण को विस्तारित करने का प्रयास करेंगे। मुझे विश्वास है कि आज का यह सेमिनार हम सभी के लिए अत्यंत लाभदायक होगा। आइए हम सभी मिलकर इस सेमिनार का पूर्ण लाभ उठाएं और हमारे वक्ताओं के ज्ञान और अनुभव से प्रेरणा लें। Now I will invite all the mentors of Pifaa and leadership team along with AMC speakers for lighting of the lamp. जैसे आप सब लोग जानते हैं कि आज का ये निवेशक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया है पिफा ने, जो पुणे की म्यूचुअल फंड वितरकों की एसोसिएशन है। मैं सबसे पहले बुलाऊंगा हमारे पिफा के अध्यक्ष सुहास साकोली जी को, जो पिफा के बारे में बताएंगे और आज के निवेशक जागरूकता कार्यक्रम के बारे में जानकारी देंगे। Good evening, everyone. I welcome you all for the first IP of this financial year. Many of you must have already been aware that Pifaa is the Mutual Fund Distributors Association, and we have more than 300 members. We have been conducting IP
that is Investors Awareness Program for almost 10 years, which has been well recognized and appreciated by the investors at large. The purpose behind conducting IIP is that we feel that the investor should be well educated. It shall help them to mitigate risk, make informed decisions, and achieve their goals effectively. Many of you must have experienced that most of the mutual funds schemes have delivered real rate of return on their investments in the longer term. It means they have delivered more return than the inflation. I would like to share some interesting data points about the mutual funds. The current mutual fund valuation, that is, we normally called it as the AUM, as of 30th September 2024, is rupees 67.09 trillion. That is almost 67 lakh of rupees. And the valuation 10 years back was almost 9.59 trillion. It means the valuation has gone up by 7 times in the last 10 years. Our city, Pune, accounts for almost 4% of the total assets of mutual funds. That is, approximately 2.5 lakh of rupees comes from the Pune itself, and rank on national level and rank 4 on national level in terms of total valuation. And the credit goes to all of you who have been long-term investors in mutual funds, have seen the ups and downs and kept invested in it. Another interesting part is that the retail investors now holds relatively higher share of the industry assets of more than 60%. It means around 40 trillion, that is almost 40 lakh of rupees of assets are held by the retail investors. The retail investors prefer to invest in equity mutual fund schemes. These investors prefer to invest in mutual funds through SIP. The SIP book in the month of September was almost 24,000 crores, and mutual fund SIP account stood at almost 9.87 crores. So today, we have brought some of the best speakers from the industry for you, and I'm sure there will be a lot of takeaways from this session. Thank you. Now I would like to invite Director Tejaswini Parandekar from Pifaa to introduce UTI speaker, Mr. Dastur. Good evening. Myself Tejaswini Parandekar welcome you all on behalf of Pifaa for Smart Money Seminar. I am going to introduce you Mr. Dastur, Peshotan Dastur. Mr. Peshotan Dastur is a group president and head sales at UTI. He holds double post-graduation qualification, Masters of Commerce degree from the University of Mumbai, and Masters in Business Administration, that is MBA degree from Xavier's Institute of Management. He also holds the Claritas Investment Certificate of CFA from USA. Mr. Dastur joined UTI AMC in May 2021 and has over 32 years of experience. Mr. Dastur joined UTI AMC. He has 32 years of valuable experience in the financial services across banking and mutual funds. Before joining UTI AMC, he spent 13 years in Franklin Templeton Asset Management India Private Limited, where he was head sales since 2014. Prior to that, he has spent 12 years of various positions across ING Bank, ING Private Banking, and also served as a head institutional sales as ING Investment Management India Private Limited. Mr. Dastur enjoys adventurous sports like paragliding and is a very big Formula One enthusiast. I welcome Mr. Dastur to share his knowledge.
नमस्कार। मेरी आवाज़ पहुंची पीछे तक? एक बार फिर कोशिश करते हैं। ये टाइम नमस्ते, गुड इवनिंग। आप मुझे देख सकते हो? सुपर। मैं कुछ नहीं देख सकता हूं क्योंकि ये इतनी ब्राइट लाइट यहाँ पर मुंह पे मारी है, एंड आई लव इट because it is like you are presenting to a dark room, so the nervousness level comes down. Thank you very much, Tejasvi, for that lovely introduction. Really appreciate it. My name is Peshotan, Dastur, Pesi, सब बुलाते हैं। मैं UTI के साथ जुड़ा हुआ हूँ और आज मैं आपसे नॉर्मली इन्वेस्टर अवेयरनेस प्रोग्राम में बहुत सारी चर्चा होती है मार्केट के बारे में, इन्वेस्टमेंट स्टाइल के बारे में, पोर्टफोलियोज के बारे में, बट बहुत कम चर्चा होती है निवेशक के बारे में। सॉरी, कैन आई हैव साइलेंस हियर प्लीज? थैंक यू। थोड़ा साइलेंस रखोगे तो मैं बात कर पाऊंगा। धन्यवाद। ये जो चक्र देख रहे हो आप यहां पर, कोई चक्रव्यूह नहीं है, एक्चुअली ये आईना है। आज मैं यहां पर आया हूं इन्वेस्टर एजुकेशन अबाउट द इन्वेस्टर के बारे में बात करने के लिए, और इसी कारण मैं आपके लिए मेरे साथ आईना लेके आया हूं टू ट्राई एंड show a reflection of investor behavior and how behavior of human being changes with respect to investments, and how can we avoid human biases in investing. हम सब निवेशक हैं, we all invest in markets, and this is what market has given. Last 1 year, market has given 28%, 13% in 3 years, in 19% in the last 5 years. सवाल ये उठता है कि मार्केट ने क्या रिटर्न दिया, वो सवाल नहीं है। सवाल ये है आपने क्या रिटर्न पाया, क्योंकि बहुत निवेश और निवेशक के रिटर्न के बीच में अंतर रहता है। ये अंतर, मॉर्निंग स्टार एक कंपनी है, उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से ये कैप्चर और क्वांटिफाई किया है। दे फाउंड दैट इफ यू हैड इन्वेस्टेड फॉर 3 years कमोडिटीज, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम, ये कोई भी तीनों एसेट क्लास में एवरेज रिटर्न जो कमोडिटीज ने दिया, 1 करोड़ रुपया 3 साल के लिए निवेश किया तो 1 करोड़ 35 लाख बनता आपका, बट एक्चुअली निवेशक ने कितना पाया वॉज ओनली 1 करोड़ 25 लाख। फर्क बिटवीन निवेश एंड निवेशक का रिटर्न। इन इक्विटी दैट डिफरेंस वॉज 25 lakhs। इन फिक्स्ड इनकम जैसी चीज में भी दैट डिफरेंस वॉज ओवर 10 lakhs of rupees। और अगर यही तीनों कमोडिटीज, इक्विटी और फिक्स्ड इनकम को साथ में जोड़कर 3 साल, 5 साल या 10 साल का अंतर देखते हैं, वक्त देखते हैं, यू सी देयर इज अ बिग गैप बिटवीन इन्वेस्टमेंट रिटर्न एंड इन्वेस्टर रिटर्न। एंड व्हाट डू यू थिंक causes this return, whether it is commodities, fixed income or equity, and even within equities? निवेशक फ्लेक्सी कैप फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, लार्ज कैप में करते हैं, मिड कैप में करते हैं, सेक्टोरल में करते हैं, बट इन एवरी केस what the study showed was there was a big difference between investment and investor return across asset classes, across time periods, and across equity categories. What causes this difference between investment and investor return is only one thing, which is आप कैसे behave करते हो
आप कैसे रिएक्ट करते हो, that behavior gap determines the gap in return that investors make. If you've heard of this person called Benjamin Graham, he quoted it very nicely. The investor's chief problem and even his worst enemy is the investor himself. And that is what we are going to try and reflect today upon, how we can try and control our behavior. You know, the human being has evolved. It has evolved over 150,000 years from there to there. From animal kingdom to industrial revolution to the digital age that we now live in. But it takes over 1 lakh years to reprogram a human being's mind and heart. And therefore, while we have physically evolved, we intuitively and intrinsically live in a previous era. आप सोचिए, ये माहौल और वक्त जब चल रहा था, the only thing you bothered about was existence. आपको दो चीज करनी थी, एक शेर से बचना था और दूसरा हिरन को पकड़कर मारना था. दो ही चीज करनी थी. Okay? There was no reason for you to think. There was only reason for you to act either out of safety or act upon opportunity. You did that for how many hundreds of thousands of years before you evolved as a human being. But cognitively and intuitively, our brain is wired still in this age and era for a long period of, evolution. The human brain, if you have to try and understand it, comes up with two elements in a human being actually. There is the X system. कितना cute है ना? बिल्कुल मेरी तरह है. Kash. You know, the X system, it shows on the face, right? Is all about the heart. It's all about the emotional approach. How does the emotional approach come? It comes from similarity. It comes from familiarity. It comes from proximity. अरे ये तो मेरे साथ 3 दिन पहले हुआ था, सो आज मैं वही कॉग्निटिवली रिस्पॉन्स ऐसा ही होगा मेरा. दिस इज वेयर द हार्ट वर्क्स. दिस is where the logical approach works, where you analyze, you think, you evaluate, and then you finally decide. You think of it, on the C system of the human being, it requires effort to process. On the X system of the human being, it is intuitive reaction that you bring on an immediate basis. मैं आपको उदाहरण देता हूं. एक कांच का बक्सा लीजिए, अ ग्लास बॉक्स, उसके अंदर एक सांप रखिए और आप ऐसे खड़े रहकर सांप देखते रहो, राइट? सडनली वो नाग उठकर ऐसे आपके तरफ लीप करता है. आपका रिएक्शन क्या होगा? यू विल इमीडिएटली मूव बिहाइंड. व्हाई? है तो वो बक्से में ना. Because your mind to start the C system takes a lot of time to process the data, but your heart immediately reacts to a situation. No matter how protected you are, the सांप is caged, but your reaction will originate much later from processing. अरे डर क्यों रहा है, वो तो बंद पड़ा है. But the heart will jump and leap immediately.
You know, there is a good social economist called Frederick. He's based out of Yale. He brought this to life in the human mind and the way it thinks in some very good studies. But some of his studies that found the most acclaim is, you know, these simple questions. I'm going to ask you a question, and I want you to answer when I ask you the answer aloud. It takes 5 minutes for 5 machines to make 5 widgets. How long will it take 100 machines to make 100 widgets? How many of you say 100 minutes? Say yes. How many of you say 5 minutes? How many of you say 1 minute? 1 minute? Many are not answering at all. 100 minutes. How many 100 minutes? हाथ उठाइए. अरे 5 का 5 है तो 100 का 100 होगा ना भाई. The correct answer is actually, but in your first instinct, it was 100 was the response that came to you. Let me ask you another question and answer fast. Every day, you know, तालाब में लिली या लोटस होता है. A lily patch हर दिन डबल साइज हो जाता है. अगर पूरा लेक कवर करने के लिए 48 दिन लगते हैं, तो आधा लेक कवर करने के लिए कितना टाइम लगेगा? How many thought of 24? You thought of 24. You thought of 24. You know, you have to be honest to yourself. It says there, हर दिन वो डबल होता है, तो 47th day, if it covers half the lake, on the 48th day, anyway the lake will get covered. This is decision making on the C system versus the X system. And this, when we start applying, okay, when we start applying in our lives in investments, is where the issue comes up when we act without processing as per the X system. How do we manifest all of these biases in our life as far as behaviors that cost us in investing? ये कहानी आपको महाभारत की याद है? या पांडवास, कौरवास, युधिष्ठिर, दुर्योधन. Yudhishthir was invited. He had the urge to gamble. So do you. Everybody does. If you don't, then you would have sat only in fixed deposits. You have the urge. Intrinsically, humans have the urge. Somebody has it more, somebody has it less. But intrinsically, you have the urge. Okay? Now, if you go back in this mythological story also, what was the big thing that played out? It was ego. Yeah? It was the craze to say, नहीं नहीं, आमंत्रण निमंत्रण आया है तो मैं तो जाऊंगा ही. It was dislike losing. And that is why you lost your army, you lost your treasury, you lost your brothers, you lost your kingdom, and we also know, as the story goes, you lost your wife. And you didn't lose it once, you were forgiven, and then you got attracted again, and you went and lost it all again. This happens in human beings all the time, the game of dice. Let me try and play this game with you, okay? मैं आपको 1000 रुपया देता हूं. आपके पास 2 ऑप्शंस है. ऑप्शन ए, आप 1000 के ऊपर 500 रुपया और मेरे से लेके जाइए. सो 1500 रुपया आप घर पे लेके जाओगे. ऑप्शन बी, मैं एक कॉइन उड़ाऊंगा. आपको अगर हेड्स आया तो आप 1000 रुपया एडिशनल लेके जाइए. टेल्स आया तो कुछ नहीं मिलेगा, जो ओरिजिनल 1000 था वही आप लेके जाओगे घर पे.
You have 1,000. You have choice A, take additional 500 and go home. Choice B, flip a coin. If you get heads, you'll get additional 1,000, which means 2,000. Or otherwise, tails aaya to you take 1,000 and go home. How many will take option A? Just scream out A. वापस पूछता हूं, how many will take option A? 500 रुपए ऐसे ही guaranteed आपको घर पे लेके जाओ. How many will take A? How many will take B? Some will want to take A and B both. Now let me change the question. मैं आपको 2,000 रुपए देता हूं. ओके, मैं आपको 2,000 रुपए देता हूं. ऑप्शन ए इज के आप गारंटीड आपको 500 रुपया छोड़ देना है टेबल पे. यू लूज 500 रुपीज. ऑप्शन बी, आप कॉइन उड़ाइए. साहेब पाहिजे तर मी माइक वरती अनाउन्स करत देता ना. सगळ्यांनी ऐकलं. Option B, you flip a coin. If it's tails, you lose 1,000. Huh? If it is heads, you lose nothing. 2,000 रुपए दिए, 500 रुपया एक ऑप्शन में आप गारंटीड लूज करते हो. दूसरे ऑप्शन में कॉइन उड़ाने का चांस मिलता है. एक बाजू आया तो आप कुछ नहीं हारोगे, बट दूसरी बाजू आया तो 1,000 हार जाओगे. सो व्हाट विल यू चूज? How many choose A? How many choose A? Yeah, जरा ऐकू द्या. You are ready to take a guaranteed loss of 500 है. बहुत अच्छा है. एक काम करता हूं, मैं आ रहा हूं गोल घूमते. हर लोग एक 500 की नोट निकाल के दे दो मुझे. मैं देखता हूं हकीकत में you are ready to lose 500. You know, now look at the human brain. Huh? In both the options, you could have landed up with 1,500 rupees. In the first option, 1,000 plus guaranteed win of 500. दूसरे ऑप्शन में 2,000 guaranteed loss of 500. But the way the human brain works is, that when you are confronted with a profit, you normally become conservative. For most people, you would have said, अरे 1,000 के ऊपर 500 और मिल रहा है ना, लेके चलता बन घर पे. That is the normal reaction. Okay? When you are faced with losses, you will take more risk. You will say, साला 2,000 रुपए में से 500 रुपया तू खा जाएगा. ऐसे थोड़ी ना दूंगा मैं. तू उड़ा, कॉइन उड़ा. You are ready to lose 1,000. Why? Just because you do not want a guaranteed loss of 500. This is true human behavior. And why does this behavior work out? Is because winning, okay, is great, but the pain of loss in a human being is far, far greater than the pleasure of gain. Between greed and fear, which is a stronger emotion? Greed or fear? Greed? अरे दुनिया में सब क्राइम बिकॉज ऑफ ग्रीड होता है. Greed or fear? Fear is by far a bigger emotion. And therefore, the pain of loss is far bigger than the pleasure of gain in any human being. In investments, what does this actually mean? Loss aversion. मैं लॉस तो नहीं खाऊंगा. कुछ भी हो जाए, मार्केट कहीं का कहीं भी उतर जाए, मैं लॉस कभी नहीं बुक करूंगा. बहुत बार होता है कि जब आपका लॉस नोशनल हो, आप क्या करते हो? नहीं नहीं, ये मार्केट 100 का 80 हो गया, नो प्रॉब्लम. 80 का 60 हो गया, नो प्रॉब्लम. इट इज नोशनल लॉस. अभी तक लॉस आपके घर पे आया नहीं है,
When it is a notional loss, you will take more and more risk. When you face such a situation, very often we'll end up holding losers and we sell winners because loss में कोई निवेशक पैसा निकाल के जाता नहीं है. When it is actually realized loss, मान लो आप actually loss book करके निकले, you will become a conservative investor, you will prefer fixed income and you will not want to take risk again because, or you will end up booking profits very early. You need to do exactly the reverse. If something goes really bad against you, cut your losses. Take the loss. Do not have dislike or aversion for loss in your investments because the gain somewhere else can be much larger by you shifting your investments. Loss aversion is a big challenge in investing world. You know this person? Any guesses? He's a guy called Afzal Khan. You remember Afzal Khan? In the story? You remember this story, right? Correct? So everybody knows one part of this story very, very well. Ke, you know, Chhatrapati Shivaji Maharaj was great, very brave, shrewd, but nobody understood what went wrong with Afzal Khan. In this story, there is one part of the story which says that for the meeting that was supposed to happen for negotiation of peace, Chhatrapati Shivaji Maharaj did not go there on time. He kept delaying the meeting. So he was waiting. What was Afzal Khan thinking? कि ये तो डर गया है, इसके लिए सामने नहीं आ रहा है, you know, ये एकदम डरा हुआ है. और जैसे जैसे वक्त गया, अफजल खान का कॉन्फिडेंस और बढ़ते गया. And when his confidence became overconfidence is when Chhatrapati Shivaji appeared, and we know what the story is after that. In investing, like with Afzal Khan, overconfidence bias creates big damage to investor portfolios. How does overconfidence bias take place in the market? These are newspaper articles of recent times. 93% of F&O traders are loss makers. In the last 3 financial years, 71% of retail traders making losses in intraday trading. Number of individuals making losses, gross loss and net loss, has been 90+%. And when you look at winners and losers, individuals have been the biggest losers in the year financial 24 only because of overconfidence bias. ये आता किधर से है overconfidence bias? You first of all overestimate your own capability. You know, if you understand Gujarati and the definition of MBA in Gujarati is mane baddu avre. Mala sagle yeti. I know everything, मुझे सब आता है. And जिस दिन आपके दिमाग में ये बैठ जाता है ना, higher probability, okay, is what you will bet on the results that you wish for, not necessarily what are likely to come true. What happens with overconfidence bias? You take risky investment choices, you excessive trading, and you do not seek advice. This audience, excellent that you work with members of Pifaa. मैं आपको ये आश्वासन दे सकता हूँ कि जो भी पीफा के मेंबर के साथ आप काम कर रहे हो, their ideology remains strong and solid with one focus, निवेशक के हित में काम करना है
and you are always in safe hands. But this confidence, I can tell you in this room, क्योंकि मैं I don't represent either of the two sides, I can tell you with big confidence, most investors have overconfidence in their capabilities. लोग मुझे अक्सर पूछते हैं कि तुम क्या करते हो तुम्हारे पैसे के साथ? मैं बोलता हूँ मैं कुछ नहीं करता हूँ भाई, एक तो मैं शादीशुदा हूँ, पैसे कितने बचते हैं? कुछ नहीं, जो भी बच जाते हैं ना, बेटी है 20 साल की, बाबा रे बाबा, फिर थोड़े और रह जाते हैं, सिर्फ SIP करता हूँ, क्योंकि ना मुझे परमिशन मिलता है ना मुझे जानकारी है मार्केट्स के बारे में. आई जस्ट नो के आमदनी है, पहले निवेश करो फिर खर्चे करो, मजानी लाइफ. देयर इज नथिंग एल्स टू बी कॉन्फिडेंट ऑफ अदर देन योर जॉब एंड योर सैलरी एंड द इन्वेस्टमेंट. मार्केट ना मेरे बस में है ना आपके कंट्रोल में है. यू मस्ट रिकग्नाइज एंड रिमेंबर दैट. और जैसे जैसे वक्त जाता है ना, और जितनी बार निवेशक को सही आउटकम मिलता है, द कॉन्फिडेंस कीप्स गोइंग हायर, द कॉस्ट ऑफ अ मिस्टेक विल बी दैट मच हायर इन एन इन्वेस्टर्स लाइफ. ओवर कॉन्फिडेंस बायस इज एक्सट्रीमली डेंजरस. सब लोग में नहीं होता है, बट जिसमें होता है वो अपना घर नीलाम करके आएगा. You know the story of Pied Piper? Everybody knows the story of Pied Piper? Perfect. Let me tell you, you are not the Pied Piper. Huh? You are the rat. Why? Because in human behavior, there is another thing which is called copycat effect. हमारा मन कहाँ ललचाता है? हमारा मन वहीं ललचाता है जहाँ पर रिटर्न आया है. निवेशक नॉर्मली उसी जगह आकर्षित होता है जहाँ रिटर्न आ चुका है. ह्या फंडमध्ये पैसे टाकायचे हो, ह्याचं रिटर्न काय दिलेत 1 वर्ष 3 वर्षांनी. अरे बाबा, सवाल ये उठना चाहिए कि अगर ये फंड ने या ये सेगमेंट ने, ये स्मॉल कैप ने, ये मिड कैप ने बहुत रिटर्न दे चुका है, अगला मौका कहाँ आने वाला है, पैसा वहाँ पर जाना चाहिए. दिस इज अ सिंपल अगेन न्यूज़पेपर आर्टिकल और रादर अ रिसर्च आर्टिकल विच सेज के जब ये रिटर्न्स आए 3 साल या 2 साल के बाद वही सेक्टर से क्या रिटर्न्स छूटे. जहाँ पर रिटर्न आ चुका है आकर्षित आप वहीं पर हो गए. हकीकत में सबसे बड़ा मौका कहीं और आने वाला है. एंड व्हेन आई लुक एट मार्केट रिलेटेड डेटा, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट PE, प्राइस अर्निंग रेशियो, सुना होगा आपने. जब जब मार्केट सस्ता रहा है, मतलब PE कम रहा है, ऐसे टाइम पे मार्केट में बहुत कम पैसा आता है. बट वही वक्त है जब 1, 2 या 3 साल एवरेज रिटर्न्स सबसे बेहतरीन रहे हैं. लुक एट द डिफरेंस. व्हेन द मार्केट PE हैज बीन अबव 20, investments have been above 13 lakh crores over the last 25 years or rather 16 years in the mutual fund industry. But look at the returns. क्यों? क्योंकि रिटर्न आ चुका तो ही अब आदमी वहाँ पर, निवेशक वहाँ पर आकर्षित होता है. It causes severe damage to join the party after 75% of the party is completed. आपको लगता है वी आर नॉट रैट्स. आपने ये सुना था ये कहानी? अब भी हाल ही 3 महीने पहले या 6 महीने पहले की कहानी है. एक कंपनी है दिल्ली में, वो IPO लेके आई थी. कितना पैसा उनको रेज करना था? 12 करोड़. पब्लिक ने उनको कितना पैसा दिया? 4,800 करोड़. नाउ टेल मी, यू आर पाइड पाइपर और द रैट? अगर किसी ने तकलीफ लेकर वो कंपनी का रेड हेरिंग प्रोस्पेक्टस पढ़ा होता, तो माइंड यू इन दैट दे आर सेइंग we are subject to concentration risk in the event of any adverse events or financial distress.
भाई मुझे सिर्फ 12 करोड़ चाहिए तेजी के माहौल में, क्योंकि सब लोग आईपीओ में पैसा लगा रहा है. लोग 4,800 करोड़ कमिट करके आए थे. द स्टॉक एज ऑन 10th of October इज डाउन बाय 50%. दिस माय डियर फ्रेंड्स इज द हर्डिंग इफेक्ट, वेयर एक जाता है दूसरा जाता है. 10 लोग गांव में पैसा बनाए, बाकी के 990 लोग उनके पीछे भागना चालू कर देते हैं. It creates, irrational, following the crowd can, even if it is rational decision making, what you need to do is make sure that you follow your plan. FOMO सुना है आपने? Fear of missing out. It's a very big emotion. मेरी बीवी में तो बहुत भयंकर से बड़ा है. She wants to be everywhere. अरे भाई छोड़ दे. अरे नहीं अपने को तो जाना ही है. आज रात को बॉम्बे पहुंचूंगा, फिर भी पार्टी पे जाना है. अरे मैं थका रहूंगा. नहीं जाना तो है ही. It is in everything and it includes in our investments. What do you need to do? You need to focus on your plan, your journey, your children. Be selfish, because otherwise you will land up participating in bubbles, and any sudden market shift can lead to severe losses. Let me give you another example, of another bias that we carry in life. ये कंपनी है, इट्स कॉल्ड विलियम सोनोमा. इन्होंने ब्रेड मेकर लॉन्च किया था यूएस में. ठीक है, इसका प्राइस रखा था $275. कोई खरीदने को तैयार नहीं था. प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था. Everybody who bought it liked the product, but nobody was willing to spend $275 to buy the product. William Sonoma ने क्या किया? They launched a refined version of the same product and they priced it at $429. Now people loved this one. अरे ये तो और भी बढ़िया दिखता है यार. Then they said, oh, अगर ये 429 का है, ये तो साला बहुत बढ़िया था. This was far better at $275. When they launched this, the sales of this went skyrocketing. You know why? Only because people started anchoring in their mind that what is available for $430, I can buy for $275. This is the simple thing. आपको कुछ बेचना है, उसका भाव पे मत बेचिए, उसके ऊपर के भाव को डिस्काउंट करके नीचे के भाव में बेचिए. People will happily buy it because their mind gets anchored to the discount and original price, not what you actually wanted to claim from them. Let me tell you this is a true story. Economic Times came out with a subscription. They said if you buy only online subscription, it is 900 rupees for 1 year. If you buy only print, it is 1,800. If you buy print plus online, that is also 1,800. મજા. હવે શું કરવાનું? કાંઈ करायचं? How many will say option 1? Option 3? Everyone? So, हकीकत में, it's not that nobody took option 1, because people that wanted to read only online, अरे किसको न्यूज़पेपर पकड़ना है, उन्होंने ऑप्शन 1 लिया क्योंकि मुझे तो 900 रुपये में मिल रहा है. ऑप्शन 2 बोलेगा बेवकूफ़ है क्या, वो फ्री में ऑनलाइन साथ में मिल रहा है, तो 0% टुक ऑप्शन 2. नाउ दे फ्लिप्ड इट अराउंड. दे सेड ये जो ऑप्शन 2 है वो बकवास है ना, निकाल दो. जब उन्होंने ये निकाल दिया,
look at how the results changed. Because 68% of the people were happy to be reading online, just because you had got a print plus online subscription free, you had jumped to option C. When I took that only print, not that I took option C away, this is how anchoring in the human mind works. And in investments, we get hooked on to ideas and we remain invested in those ideas, okay, endlessly, assuming कि जो पास्ट में हुआ है आगे होते जाएगा. मैं उदाहरण दे सकता हूँ. बहुत बढ़िया बैंक है, 25 साल से 25% की ग्रोथ बढ़त दिखाई है, ओके. पिछले 4-5 साल में इट इज स्ट्रगलिंग, बट वी आर ऑल हुक्ड ऑन टू दैट प्राइवेट सेक्टर बैंक बिकॉज वी बिलीव कि बस ये कहानी तो बदलेगी, ये कहानी तो बदलेगी. आई एम वेरी श्योर बदलेगी. आई हैव ग्रेट कॉन्फिडेंस इन दैट बैंक. बट आपको अगर 10 साल रुक के बदल दी गई कहानी, फायदा क्या हुआ? क्योंकि समवेयर एल्स देयर वाज बेटर मनी टू बी मेड. Anchoring bias is what this is called, and we get hooked in terms of our own past experience and we are not ready to move forward. Impact इसका क्या होता है? You take initial investment decisions, market बदल गया, आप उसके साथ वो हवा के साथ बदले नहीं, you remain anchored in a stock or a fund endlessly, not willing to change. Anchoring bias, you know, how does it get created? Out of experience. 3 बार 4 बार किया, सही निकला, so हर बार आपका दिमाग वहीं पर जाकर एंकर होता है. You are not able to move ahead. The last bias that I want to talk about, sunk cost fallacy. Let's begin. You know what is sunk cost fallacy? ये 2 बोट पे बैठे हैं, एक एंकर है, बस उनके पास एक ही एंकर है, बोट डूबने वाली है, बोट का वजन कम करना है. एंड यू से ओ लेट्स गेट रिड ऑफ द एंकर सो द बोट डजंट सिंक. नहीं, ये तो बहुत महंगा था, इसको तो नहीं फेंक सकते हैं. मतलब भले हम दोनों बोट लेकर डूबे, बट एंकर क्यों? क्योंकि एंकर के पीछे हमने पैसा खर्चा किया है. भले नैया डूब जाए, बट एंकर नहीं जाने दूंगा. Let me give another example. मान लीजिए आपको मैंने पुणे सिटी में फिल्म फेयर अवार्ड हो रहा है, ठीक है? कहाँ पर हो रहा है? बालेवाड़ी में. जिस शाम को हो रहा है अवार्ड, भयंकर बारिश होती है, पानी लॉक जैम हो जाता है, ट्रैफिक धीरे धीरे हिल रहा है. Will you go for the awards or no? Please remember, I have got the ticket for you for free. आपने कोई पैसा नहीं दिया टिकट के लिए. आप तकलीफ उठा के जाते क्या? नहीं जाते. करेक्ट. नाउ लेट मी चेंज द सब्जेक्ट. आपने 2500 रुपया दिया है ये टिकट के लिए. आपने 2500 रुपया दिया है. याद रखना, आपको मुझे भी 500 देना है. ऐसे हंस हंस के भूल मत जाना. आपने 2500 रुपया दिया है, बारिश भी वही है, ट्रैफिक जैम भी वही है, लॉगिंग भी वही है. आप जाते कि नहीं जाते? दिस इज संक कॉस्ट फैलेसी. क्योंकि मेरे बटवे से 2500 गया, कुछ भी हो जाए, डार्लिंग बेड गाड़ी में जाना तो है ही. This is sunk cost fallacy, that everything remaining the same, you will keep increasing your problems as far as, you know, it goes, because you have invested into that problem. You want me to give you real life examples? The danger is the same, but whether the tickets are paid for or free, but because you paid for the ticket, you will just go to justify it to yourself. Let me give you other examples. You know, when people make losses, अरे ये बहुत बढ़िया स्टॉक है, साला 80 में लिया था, अभी 70 का चल रहा है, मैं तो और ले रहा हूँ.
अरे 50 का हो गया और ले रहा हूं. We keep averaging downward. Why? Because of sunk loss fallacy. Anybody has an old car that you want to sell? Yeah? But you are not able to sell, you are not wanting to sell, then कुछ गड़बड़ होता है, आप उसको रिपेयर में डालते हो, एंड यू रियलाइज साला 1.5 लाख का तो वैल्यू था, उसमें 25,000 और खर्चा करके आया मैं. फिर आप 3 महीने चलाओगे और फिर वापस जाके उसको 40,000 का और खर्चा करके आओगे. ओल्ड कार इज अ क्लासिक केस ऑफ संक कॉस्ट फैलेसी. कभी आप मूवी पिक्चर से उठ के निकले हो बाहर? हाँ, कई बार. बहुत सारे लोग यहाँ पर होंगे कि शायद उन्होंने 1 या 2 या 3 बार जिंदगी में किया होगा. क्यों? क्योंकि पिक्चर का पैसा देकर मैं आया हूँ भाई, कुछ नहीं तो एसी तो खा के जाऊंगा. भले मेरा वक्त बर्बाद हो रहा है, भले मेरा दिमाग खराब हो रहा है, बट बिकॉज आई संक कॉस्ट इन बाइंग द मूवी टिकट, I will not get up from the theater and go. और आपको लगता है ये सब छोटी मोटी चीज़ों में होता है? No, my friends, this happens in big important decisions. You remember this thing? You remember this airplane? Older generation would definitely know it. What is it? The Concorde. Do you know the Concorde story? They started creating, the British and the French governments after World War II wanted to show off their supremacy. So they started creating this supremely good, great, fastest aircraft in the world. They started in the 1960s. In 1976, the first Concorde ever flew. At that point of time, they spent $1.3 billion in creating the Concorde. In today's date and time, it is $3 billion. In 2003 was the last flight of the Concorde, and its entire journey from 1960 till 2003, Concorde never made money. But because it was a subject of ego, and because it was a subject कि भाई इतना पैसा तो लगा दिया तो और लगाओ और लगाओ और लगाओ, Concorde was a loss-making proposition in its entire lifetime. No one was ready to pull the plug only because of sunk cost fallacy. What can you do? The way to take care of these biases: one, diversify such that nothing will create this bias which is overpowering in your mind. Have a vision of portfolio, not of a fund, investment or stock. Most investors, जब डिस्ट्रीब्यूटर आपके घर पे आके आपका पोर्टफोलियो रिव्यू देखता है, आप क्या देखते हो? सबसे ऊपर से नीचे. अच्छा, इसने 13 दिया, इसने 11, इसने 8, इसने 6. अरे ये 6 वाले को निकाल रहे और पैसा वापस रीएलोकेट कर ऊपर वाले में. नॉर्मल ह्यूमन बिहेवियर. That's not the way to look at it. You have to look at the last line and look at the overall portfolio and compare that with the broad market and say, क्योंकि हर मार्केट में कुछ न कुछ अच्छा करेगा और दूसरे चीज का आगे जाने वक्त आएगा. बट इफ यू कीप चेंजिंग, यू विल नॉट कैप्चर द फ्यूचर अपॉर्चुनिटी, यू विल ओनली बी चेसिंग पास्ट रिटर्न्स. कुछ गलती हो गई, छोड़ दो ना, आगे बढ़ो. जिंदगी मत रुकाओ, लर्न फ्रॉम इट, segregate your losses and gains, pay attention to your investments, and definitely you need to have a great financial advisor. In closing, sorry, I'll just, I don't know, say these are 5 investment, behaviors that impact our investments. Remember the Mahabharata story and don't land up becoming like Yudhishthir. Remember Afzal Khan for his overconfidence. Remember herding behavior like Pied Piper. Remember the toaster, bread maker story for anchoring. Remember the Economic Times story for anchoring. And last of all, remember the Concorde story of sunk cost. Don't waste good money behind bad money. I'll stop over here. Thank you very much.